Hello everyone. We are going to practice our English with another beautiful story. You can repeat these words and sentences after me. And if you want, you can take some notes. You can write down some difficult words and their meanings. You can pause the video and practice these words and sentences. So, without any further ado, let's get started. There was a 9-year-old kid sitting at his desk and all of a sudden एक 9 साल का बच्चा अपनी मेज पर बैठा था और अचानक there was a puddle between his feet and the front of his pants got wet too. उसके पैरों के बीच एक पोखर था और उसकी पैंट का अगला हिस्सा भी गीला हो गया था. He thought his heart was going to stop and he couldn't imagine how this might have happened. उसे लगा कि उसका दिल रुक जाएगा और वो सोच भी नहीं सकता था कि ये कैसे हुआ होगा. It had never happened before. He knew that if the boys find out about it, he will be teased all the time at the school. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. वो जानता था कि अगर लड़कों को इस बारे में पता चल गया तो स्कूल में उसे हमेशा चिढ़ाया जाएगा. When the girls find out, they'll never speak to him again as long as he leaves. The boy put his head down and prayed for a miracle. जब लड़कियों को पता चलेगा तो वे उसके जीवित रहते उससे कभी बात नहीं करेंगी. लड़के ने अपना सिर नीचे किया और चमत्कार के लिए प्रार्थना करने लगा. He knew that if anyone notices what he had done, he will never be able to face anyone in the school anymore. वो जानता था कि अगर किसी को पता चल गया कि उसने क्या किया है तो वो स्कूल में कभी किसी का सामना नहीं कर पाएगा. He looked up and he noticed a teacher who was approaching him. As the teacher was walking toward him, a classmate named Susie, उसने ऊपर देखा और देखा कि एक शिक्षक उसके पास आ रहा था. जैसे ही शिक्षक उसकी ओर बढ़ रहा था, सूजी नाम की एक सहपाठी who was carrying a goldfish bowl filled with water tripped in front of the teacher and inexplicably dumped the bowl of water in the boy's lap. जो पानी से भरा एक गोल्डफिश का कटोरा लेकर जा रही थी, वो शिक्षक के सामने फिसल गई और बिना किसी कारण के पानी का कटोरा लड़के की गोद में गिरा दिया. The boy pretended to be angry with Susie, but all the while he thanked the situation. लड़के ने सूजी से नाराज होने का नाटक किया, लेकिन उस पूरे समय वो परिस्थिति का शुक्रिया अदा करता रहा. All of a sudden, instead of being the object of ridicule, the boy became the object of sympathy. अचानक उपहास का पात्र बनने के बजाय वो लड़का सहानुभूति का पात्र बन गया. The teacher took him downstairs and gave him gym shorts to put on while his pants dry out. शिक्षक उसे नीचे ले गए और उसे जिम शॉर्ट्स दिए ताकि जब तक उसकी पैंट सूख न जाए तब तक उसे पहन सके. All the other children were on their hands and knees cleaning up around his desk. बाकी सभी बच्चे अपने हाथों और घुटनों के बल पर उसकी डेस्क के आसपास सफाई कर रहे थे. The sympathy is wonderful, but as life would have it, the ridicule that should have been his was transferred to someone else. सहानुभूति अद्भुत है, लेकिन जीवन में ऐसा होता है जो उपहास उसका होना चाहिए था वो किसी और को हस्तांतरित कर दिया गया. Susie, she tried to help, but they told her that it was all her fault.
सूजी उसने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि ये सब उसकी गलती थी। Finally, at the end of the day, as all the students were waiting for the bus, the boy walked over to Susie and whispered, "You did it that on purpose, didn't you?" आखिरकार दिन के अंत में जब सभी छात्र बस का इंतजार कर रहे थे, तो लड़का सूजी के पास गया और फुसफुसाया, तुमने ऐसा जानबूझकर किया था, है ना? Susie whispered back, I wet my pants once too. सूजी ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने भी एक बार अपनी पैंट गीली कर दी थी। This was our one more story with a beautiful message. I hope that you like the story and the way I am teaching. Please keep liking, keep watching, keep growing, keep sharing, and please do not forget to like, share, and subscribe to this channel for more informative videos. I'll see you in the next video with a beautiful story. Till then, please take a really good care of yourself.